Okay, my name is Ojas Sharma and I'm a Vedic astrologer. I am into astrology since 2016 and I'm learning astrology and I believe I'm still studying. I'll keep on studying. And this segment is something where you'll not stop learning. There are a lot of things to learn and explore. Every time you'll deep dive into astrology, you'll find something new. It's just like ocean. Once you'll get into this, you'll find a new pearl. So I'll not call myself an astrologer, but rather I'll call myself a learner and a lifelong learner. तो फिर आप इसमें क्या हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे कैसे कहाँ से क्यों एस्ट्रोलॉजी में घुसे और फिर कौन कौन मिला, कैसे आपने सीखा? Okay, so well, it was so exciting journey, and it all started in 2016. I'll say I was like completely new to this world. वो एक वैसा होता है ना कि you enter into a big library and you don't know which book you need to pick in order to start. Especially in such a subject जब आपको दिख रहा है कि लाखों किताबें हैं, कौन सी किताब उठानी है कि आपको ए कहाँ पे मिलेगा एस्ट्रोलॉजी का, you don't know about it and there is nobody to tell you. So what happened at that point of time, I went to took a consultation. One of my friend, like he became my friend now, but then at that point of time, like this astrologer, he pinpointed the issue so minutely that I was so surprised. मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इतना डीप डाइव जा करके आपको एग्जैक्ट वही चीज बोल रहा है जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं किया है, दैट प्रॉब्लम. And I believe आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है. एंड फॉर मी समथिंग न्यू टू स्टार्ट कि ये है क्या, हाउ दिस पर्सन गॉट टू नो. एंड देन very next moment this astrologer predicted that one day you are going to be a well known astrologer. At the same point of time said like you got a very good intuition, you need to practice meditation. And I was like what, like I mean what you're talking about, this is something I never thought about it. I always wanted to be an artist and since then like I asked him that I wanted to learn. वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, अभी तक मेरा जर्नी कंटिन्यू है. आई इनिशियली स्टार्टेड विद दीपांकर देसाई. ही टॉट मी अबाउट द साइंस, अबाउट द हाउसेस. एंड देन संजय रथ सर, उनके बहुत सारे वीडियोस देखे. प्रोफेशनली उनसे मैं सीख नहीं पाई डायरेक्टली, बट देन आई से जस्ट लाइक एन एकलव्य आई learned a lot of things from his videos as well. And then I met Dipanshu Giri sir. And that I'll say that was not the end, that was the beginning for me. It was the first step into astrology. So that's how I started. So predictions करना सीखना एक कला है, वो धीरे 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 आप सीखते हो. अभी क्या है कि देर आर लॉट ऑफ शेटर्ड नॉलेज, यू विल गेट इट फ्रॉम हियर. आपने एक प्लैनेट के बारे में पढ़ लिया, आपने एक राशि के बारे में पढ़ लिया, उसको ब्लेंड कैसे करना है, यू नॉट अवेयर अबाउट इट. इनिशियली कोई भी ना अपने आप को जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर आता है. दैट्स हाउ ओजस एस्ट्रो स्टार्टेड. माय पर्पस टू स्टार्ट ओजस एस्ट्रो वाज इनिशियली to make learning simplified. The way I learned, because it took almost good more than 3-4 years for me to understand the subject, a complex subject of astrology. I made it so simple for myself, obviously with the help of gurus. अगर वो साथ नहीं होते या उनसे नहीं सीखा होता तो शायद अभी इस मुकाम तक नहीं आ पाती कि मैं उसको डिकोड कर पाती, या डिकोड करने से भी बेटर मैं कहूँगी कि उसको और सिंप्लीफाई कर पाती इन ऑर्डर टू लर्न थिंग्स. आसानी से सीखने के लिए ना चीज़ों को आसान करना बहुत ज़रूरी है. दिस इज व्हाट वी डू एट ओजस एस्ट्रो. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी. राइट मैम, तो फिर आपने ऑलमोस्ट बता ही दिया कि ओजस एस्ट्रो क्या है और मतलब किस तरीके से क्या चीज़ आप इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं. तो ओजस एस्ट्रो उनसे अलग कैसे है कि ओजस एस्ट्रो में सबसे अलग क्या है कि जिन लोग जो आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनको क्या अलग मिलेगा इसमें? फर्स्ट थिंग इज लाइक वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी environment, that environment where you can grow as a person, where learning can be initiated. एक वो होता है ना, if I'll give a small example, डॉक्टर्स की जो फैमिली होती है वहाँ से डॉक्टर्स का निकलना ईजी हो जाता है, बिकॉज सिंस चाइल्डहुड पर्सन को वो इन्वायरमेंट, बच्चे को इन्वायरमेंट मिला होता है. सो वो इन्वायरमेंट होना, वो कम्युनिटी होना डिस्कशन के लिए. इन ऑल ऑफ दीज ईयर्स व्हाट आई रियलाइज द लैक, जो मेरे को लैक रहा वो था कि एक प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने के लिए कोई फोरम नहीं था कि हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है. व्हाट शुड बी द राइट वे टू डू द कंसल्टेशंस. You can get the knowledge, theoretical knowledge from anywhere. There are n number of platforms.
there are a number of teachers who are there, but here we are more focusing on the practice part. I mean, you'll see in our previous lectures, previous courses of nakshatra ka, चाहे वो nakshatra का basic course हो या basic predictive हो या advanced learners के लिए predictive advance हो या relationship D9 decoding blueprints का course हो, ये सारे कोर्सेज के अंदर ना आपने एक चीज कॉमन पाई होगी कि हर कोर्स के अंदर वी गिव प्रॉपर स्पेस to a learner to speak out, because we believe no question is a silly question. We make sure that all the questions is been catered and in the lectures. Live lecture is to enhance more engaging environment so that they can clear out their doubts, and there are practice sessions as well. So practice sessions means I am not going to, like, our teachers are not going to tell ki this is going to be the prediction. It's like we have taught them the technique. Now we have given them 10 charts and we are asking them, you apply the technique. So it's like providing them hand holding throughout this journey, how to initiate the predictions, what should be the right approach, what to look first and then what to look next. It's just like following baby steps and then later on getting the prediction. So eventually, no matter like whether you are aiming to become a professional astrologer, whether you are just want to learn to know yourself better, or just to just out of curiosity, just out of, you know, it's your hobby or passion, only thing which is important here is to make things simplified, to make learning accessible, and to make it easy to understand with a basic practice approach, because हम करके ज्यादा सीखते हैं पढ़ के ज्यादा सीखने के कंपैरिजन में. सो ओजस एस्ट्रो पे हम करके सिखाते हैं, पढ़ के तो कहीं से भी सीख सकते हैं. So this is the reason that we initiate book reading. हमारे proper book reading के sessions भी होते हैं, and then there are master classes, there are live practice sessions, Q&A sessions होते हैं. तो Q&A sessions के अंदर assignments check होता है directly, so it's not like कि assignment भेज दिया तो there is no one to look out the assignments. Trainers taking out time to look over the assignments and then telling them ki where they are going wrong, so that once you'll get to know aap galti kahan kar rahe ho, you'll not repeat that mistake again. So that's how Ojas Astro is different from other platforms. It's more of a practical learning rather than theoretical learning part. I absolutely love the idea of Ojas Astro, to be honest, and I am really want to know more about it. अगर सपोज करिए कि जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपने बुक रीडिंग कैसे स्टार्ट की और भी सेशंस आपके चल रहे हैं, मास्टर क्लास पे आप लॉन्च करती हैं लोगों के लिए, तो आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि आपके कौन से कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, अगर आप बताना चाहिए, और क्या कोर्सेज आपके आने वाले हैं, और लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इसको तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, मतलब कि ओजस एस्ट्रो जो लोगो है और मतलब कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह थोड़ा सा आप उसके बारे में बता सकते हैं. Okay, so we have a course for nakshatra basics, जहाँ पे we are not focusing on the details of the nakshatra. It is for complete beginners. Anyone can join the course, where one can start doing prediction from the very first day. That is for beginners. And since like we have already launched one batch, तो पहले batch के अंदर there are people who are practicing astrologers even. So for them also it is something new that practice हो रहा है. So this is nakshatra, and then we have basic predictive course which is completely for beginners. Somebody who is not aware about कौन से 12 घर होते हैं, कौन से राशियां होती हैं, which are the planets, कुंडली कैसे कास्ट की जाती है, उससे प्रेडिक्शन कैसे निकलता है. तो if you are complete beginner, you don't know anything but you wanted to learn astrology, you can join the basic predictive course. Whereas advanced predictive course which is about to come, where we are going to tell more about the planetary parts, planetary conjunctions, yoga, and how D1 is relatable. There are certain nakshatras के अंदर, nakshatra padas के अंदर, it's like bit of nakshatras and predictive combined in advance, and including with the conjunctions of planet, knowing the different energies of planet. इट्स लाइक वो थोड़ा सा प्रेडिक्टिव का बेसिक आपने सीख लिया, उसके बाद में हम एडवांस पे जाते हैं तो हम प्रेडिक्टिव 2 सीखते हैं. देन इज अ रीसेंट कोर्स विच इज ऑन रिलेशनशिप, दैट इज रिलेशनशिप एंड D9 Navmansha, with the help of Rashi chart, with the help of Navmansha chart, how we are going to read the relationship, how we are going to read the bhagya of the relationship, what kind of partner you are going to attract in your life, and what will be the good time period, what will be the bad time frames, timings कैसे देखनी है, what remedies you can perform
जैसे पहले होता था ना, 2 शादी के योग हैं तो फिर वट विवाह करवा दो, कुंभ विवाह करवा दो. So there are scope for certain remedies. So where you can learn about the matchmaking, the ideal partner, and traits of your partner, about your spouse, about everything about your spouse that you'll get to know, and things that you can rectify from D1 and D9 chart. This is what you're going to learn from the, and definitely how to cast the timing of marriage. सेपरेशन के योग हैं, कब से कब तक हैं, कब तक होगा, ठीक है, लिटिगेशन कितना लंबा जाएगा डिवोर्स का, किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, किस टाइम पे खत्म होगा, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको रिलेशनशिप में होगा. एंड द ट्रेनर हु इज गोइंग टू ट्रेन, शी इज वंडरफुल, एंड definitely right of learning, like you're going to learn a lot of things here, and this is going to be a very exciting journey. I mean, so far we've got good feedback from our students, and for the consultations as well. So if somebody want to enroll for the courses, they can contact to the number below, right? We have shared all the details in the description section. They can go and click on the link, fill the form, inquire for the course, which course they want to go ahead, and then they are going to get the call from our side. Absolutely, ma'am. Absolutely. It was lovely talking to you, and we are very pleased to have you over here. Thanks so much. Thank you very much.